అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. జనాలను మోసం చేయడం కామన్, అందులో అమాయకులను మోసం చేయడం రొటీన్. కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఆ జోనర్లోకి వెళ్ళలేదు. కొడితే కుంభస్థలాన్నే కొట్టాలనుకున్నారు. బిగ్ షాట్లు సెలబ్రిటీలను టార్గెట్ చేశారు. వారిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి నేచర్ ఫ్రెండ్లీ ట్యాగ్ లైన్ తీసుకొచ్చారు. అంతే, సెలబ్రిటీలంతా క్యూ కట్టారు. సస్టైన్ కార్ట్లో కోట్లు పెట్టారు. సహజ సిద్ధమైన ఉత్పత్తులు అంటూ ఏకంగా వాళ్లే పబ్లిసిటీ ఇచ్చేసుకున్నారు. వీళ్లను ఎరగా చూపి ఇన్వెస్టర్లకు వల వేశారు. పెట్టుబడులు వరదల్లా వచ్చాయి. పెట్టిన డబ్బు డబల్ అవుతుందని ఆశపడేలోపే బోర్డు తిప్పేశారు. ఇన్వెస్టర్లను రోడ్డున పడేశారు. హైదరాబాద్ సస్టైన్ కార్ట్ వ్యవస్థాపకులు కాంతిదత్ చేసిన మోసమిదే. సెలబ్రిటీలతో ప్రచారాలు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవుట్లెట్లు, సహజ సిద్ధమైన ఉత్పత్తులు అన్నారు. కానీ కనీసం సిబ్బందికి జీతాలు కూడా ఇవ్వలేదు. కోట్ల రూపాయలు పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లను సైతం బురిడీ కొట్టించారు. అసలు సస్టైన్ కార్ట్ మోసమేంటి? అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన సెలబ్రిటీలు ఎవరు? ఎవరెవరికి ఎన్ని కోట్లు టోకరా పెట్టారన్న విషయాలు కాంతిదత్ నమ్మి మోసపోయిన ఇండియా యాక్సెలరేటర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు మునీష్ భాటియా మాటల్లో తెలుసుకుందాం. So we, along with other 50 HNIs across India, Dubai and US, have invested in Sustain Cart, which is a sustainability marketplace, in 2 rounds, a total of 6.5 CR. तो हमने सभी इन्वेस्टर के साथ मिलके 6.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है सस्टेन कार्ट में. जब हमने सेकंड ट्रांच डाली थी तो हमने एक कंडीशन रखी थी कि आप अपने अकाउंट्स का एक्सेस हमें दोगे ताकि हमें पता चले कि आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड जैसे ही हमने पैसे डाले सेकंड बार तो फाउंडर्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया. तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है एंड हमने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया तो हमें और भी इश्यूज़ पता चले कंपनीज़ में, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं मिल रही थी या कुछ वेंडर्स की पेमेंट्स नहीं हो रही थी. तो हमने फाउंडर्स को रीच आउट किया और वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था. तो हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ है एंड उसके बाद रिसेंटली उन्होंने कंपनी बंद ही कर दी है और उन्होंने पूरा डिजिटल प्रेजेंस कंपनी से हटा दिया है. ऑनलाइन से लिंक्डइन पेज नहीं है, वेबसाइट नहीं है, डोमेन भी बंद कर दिया है. बट वो जो हमने लास्ट 2.5 CR डाला था उसका कुछ पता नहीं है. और आइडिया फाउंडर्स का ये था कि हम सेलिब्रिटीज़ को लेके आएंगे और उनके नाम से भी ब्रांड लॉन्च करेंगे. अच्छा. तो कुछ ब्रांड्स लॉन्च भी हुए हैं. सो काजल अग्रवाल इज़ देयर, कीर्ति सुरेश इज़ देयर, उनके ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं एंड दे आर अदर इन्वेस्टर ऑल्सो. जैसे समंता प्रभु ने भी इस कंपनी में पैसे डाले हैं. Okay. तो उस टाइम पे आइडिया बहुत अच्छा था, हमें लगा था ये स्केल अप होगा, इसलिए हमने पैसे डाले थे. इसलिए हमने जब वो दोबारा आए पैसे लेने तब भी हमने उनको कहा कि हम करेंगे. इसलिए हमने उनसे काफ़ी कन्वर्सेशन करी, हमें उनका विज़न अच्छा लगा, हम उनसे मिले भी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और सब सही लग रहा था क्योंकि दे ऑल्सो कम फ्रॉम गुड बैकग्राउंड. तो हमें लगा था कि बिज़नेस सही चलाएंगे और 2-2.5 साल तक सही भी चला. हम रेगुलरली उनके टच में थे. लेकिन जब ये इश्यूज़ बाहर आने लगे, कांतिदत्त हैज़ नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग. कांतिदत्त के बारे में हमें पता चला है कि किसी और कंपनी में जो उसने बनाई थी वहाँ पे भी एक जो फाउंडर ने पैसे लगाए थे उन्होंने भी एक FIR लॉन्च की है हैदराबाद में ही, जो तृतीया ज्वेलरी के नाम से एक और ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया था. तो उसके लिए भी FIR है. तो अब हमें पता चल रहा है कि और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा उन्होंने लिया हुआ है. इसमें कम से कम 200 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे. Okay. इंडिया से, दुबई से और US के इन्वेस्टर हैं. ये सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं. हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनको उनका पैसा वापस दिया जाए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़ा हो रहे हैं. तो अगर ऐसे फाउंडर्स स्टार्टअप के साथ पैसा लेके भाग जाएंगे तो पूरी इंडस्ट्री को नुकसान होता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे. सो हम चाहते हैं कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं इस इशू के ऊपर दिखें, क्योंकि ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें गया हुआ है और पता चल रहा है कि बाकी लोगों को भी सेम चीज़ फेस करनी पड़ रही है ऑन अदर बिजनेसेस जो कांतिदत्त ने ओपन किए हैं. तो इसको रोकना भी चाहिए ताकि और लोग इससे डिस्टर्ब नहीं हो और उनका पैसा नहीं जाए. और लीगल कोर्स जो भी होगा, वन कि इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न किया जाए, और अगर कुछ लीगल केस की वजह से उनको पनिशमेंट मिल सकती है तो वो भी होनी चाहिए. మరిన్ని
వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.